Okay, we are live now. Yes. Okay. वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से लाइव स्ट्रीम में, नए लाइव स्ट्रीम में जिसमें हम देखेंगे स्पेस एक्स का लॉन्च। तो ये Florida, and starting tomorrow, we have two launches ओके planned कॉल within सेट। about 14 ये है hours of स्पेस each एक्स का other. लॉन्च जिसमें First लॉन्च up, किया we'll जा have रहा the है Star 1 स्टारलिंक मिशन launch targeted for 53 liftoff at सैटेलाइट 7:20 लोअर अर्थ a.m. ऑर्बिट Pacific में। time from ये Space Launch इंटरेस्टिंग मिशन Complex इसलिए 4E क्योंकि at फैल्कन Vandenberg 9 Space जो Force रॉकेट है Base. उसका फर्स्ट Then we'll स्टेज have the Globalstar 13 बार FM-15 launch रीयूज़ किया जा रहा targeted है। for liftoff on Sunday पहले भी at यूज़ किया 12:30 जाता था a.m. रीयूज़ Eastern Time फैल्कन from 9 का Launch फर्स्ट Complex स्टेज जो 40 at नीचे है, Cape Canaveral Space Force लेकिन वो Station. 12 बार ही यूज़ किया गया है। For लेकिन ये today's पहली बार Starlink ऐसा launch, किया we'll जा be रहा है कि ending इसको live coverage 13वीं just बार भी after the यूज़ किया first जा stage रहा है landing and दोबारा second engine cutoff. किसी मिशन के We'll लिए। confirm तो ये deployment काफ़ी of our Starlink एक्साइटिंग होगा satellites देखना via कि ये फिर से SpaceX's social सक्सेसफुली channels, लैंड हो but पाता है we'll या फिर also नहीं। leave the mission आशा audio करते हैं live कि on our लैंड हो जाएगा। YouTube channel तो if उसके you'd like पहले to जान follow लेते along हैं कि through ये payload स्टारलिंक मिशन deployment. है क्या। If for some reason we don't स्टारलिंक launch मिशन today, we do स्पेस have एक्स a backup opportunity tomorrow स्पेस एक्स at कंपनी का एक 11:47 मिशन है a.m. Eastern Time. जिसमें सैटेलाइट को And लोअर अर्थ as if ऑर्बिट में 3 भेजना है back-to-back ताकि ऑल launches ओवर द wasn't ग्लोब exciting enough, इंटरनेट this month कनेक्टिविटी also प्रोवाइड की जा happens to सके। be Pride तो Month. इनका एम है The टोटल Allen Allied Employee Group at SpaceX 42,000 joined fellow सैटेलाइट Angelinos to भेजने का, celebrate LA Pride जिसमें Festival इन्होंने and Parade. 2500 सैटेलाइट भेज LA दिए हैं Pride is an लोअर अर्थ annual ऑर्बिट पे, celebration in Los Angeles, और वो California, कई देशों में and is known इंटरनेट to be प्रोवाइड one of the किया जा चुका largest है। Pride events in the और world. उसी उस So if you सिलसिले haven't में already, we hope उसी you take some सिलसिले में time आगे this month to बढ़ाते send हुए some extra love 53 to our सैटेलाइट फिर से भेजे जा रहे हैं LGBTQ+ इस community. रॉकेट की मदद से, फैल्कन 9 रॉकेट For की now, मदद से। let's take a closer look at our Falcon 9 vehicle and mission at hand. तो अभी Starlink is 6 a मिनट बाकी है, constellation 6 of बज के satellites that can provide high-speed, low-latency internet all over the 6 globe, मिनट particularly in 14 remote सेकंड areas बाकी। where connectivity is limited ये or लॉन्च completely किया जाने वाला था, unavailable. लेकिन ये Today, लॉन्च we'll be विंडो था taking an additional कि 53 satellites in space in order to grow our constellation and expand कितने our 8:15 coverage. से Those 11 satellites are बजे तक housed शायद at है the इनका top of the लॉन्च विंडो, rocket in the इसके बीच में fairing. लॉन्च करना The था। job of the fairing is to ये पहले protect the लॉन्च नहीं हो पाया Starlink क्योंकि satellites फ्यूल until we reach the vacuum of लोडिंग नहीं हुई space. थी और भी Once कारण in थे। space, we'll separate the अब fairing लोड हो halves गया है, and attempt to retrieve them और with our अगर ये 50 लॉन्च degrees of नहीं Earth. होता है आज तो इसी सेम Below टाइम the पे कल fairing, we लॉन्च होगा, have the second लेकिन अब stage. तो लॉन्च It's होगा the क्योंकि ये shorter कंफर्म right हो गया है। stage above the black interstage that houses our तो Merlin देखना vacuum ये है कि engine. लैंडिंग अच्छे से हो After the पाती है कि first नहीं, and क्योंकि second ये stages 13 बार separate about रीयूज़ किया जा 2.5 रहा है minutes into फैल्कन flight, 9 the के second stage will फर्स्ट ignite स्टेज its रॉकेट को। single Merlin vacuum engine and carry the payload to its desired orbit. And below that, we have the largest part of our Falcon 9, which is the first stage, also referred to as और the रॉकेट के booster. बारे में जाने तो ये 17 मीटर Will mark लॉन्ग the रॉकेट है 13th फैल्कन 9, launch of a Falcon 9 और booster. 3.7 मीटर डायमीटर है। इसमें 9 मर्लिन इंजन लगे हुए हैं फर्स्ट स्टेज में, Missions such as और the इसका Falcon फ्यूल है 9 to reset RP1 और orbit लिक्विड and ऑक्सीजन, इसमें GPS-3-2 फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। 9 previous Starlink missions. And on screen right now is a view of our drone ship, ओके, the shortfall of Gravitas, which is using its thrusters to तो maintain ये its यहाँ पे position लैंड in किया the जाएगा। ocean. After liftoff ये and है vertical separation from the second ड्रोन, stage, we'll be attempting to recover our first stage for a record-breaking countdown. इंटरेस्टिंग होगा देखना फिर से लैंडिंग। We started the day with about 10% probability of weather violation for liftoff, but so far we are looking green. मैं आप लोगों को सैटेलाइट दिखाता हूँ कि इसमें Are all looking सैटेलाइट कैसे रखे गए हैं फेयरिंग में। जो ऊपर आपको वाइट कलर का भी दिख रहा है उसी में रखे गए हैं 53 सैटेलाइट। उसके इमेज ये रहा, ये रहा आपको स्क्रीन सॉरी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 53 सैटेलाइट रखे गए हैं फेयरिंग के अंदर। and the structure that is to the left of the Falcon 9 vehicle that you see on screen, the strong back, that will begin to recline away to its pre-launch position about 2 degrees from the Falcon 9 vehicle. So you see on screen, right below the fairing house, those clamp arms are indeed opening up. And shortly we should see the strong back begin to recline away from the Falcon 9. The strong back is part of the transporter erector, also referred to as the TE. The transporter erector's job is to roll the rocket out to the pad and raise it to the vertical launch इसके पहले position जो that you 12 see लॉन्च on किए गए हैं screen. फैल्कन 9 के फर्स्ट स्टेज का, उसके इमेजेस ये See रहे। that the strong back is retracting away from Falcon 9. The transport erector also routes the vehicle's fluids, power, and telemetry umbilicals from the ground systems to the rocket and तो आप satellites इस until Falcon इमेज में 9 देख goes सकते on हैं internal power कि जो and रॉकेट clears the इसमें यूज़ pad. किया जा रहा है, बूस्टर जो रॉकेट बूस्टर यूज़ किया जा रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेज
वो इन मिशन में भी यूज़ किया गया है, मतलब पिछले 12 मिशन में भी यूज़ किया गया है। ये 13 मिशन है जिसमें फर्स्ट स्टेज को फिर से यूज़ किया जा रहा है। 2020 में फिर स्टारलिंक मिशन, फिर टूकसैट जो 5A रॉकेट का मिशन था, सॉरी, स्टारलिंक और भी कई ट्रांसपॉन्डर 2 मिशन, स्टारलिंक मिशन, और ये सब टोटल मिला के 12 लॉन्चेस किए जा चुके हैं फैल्कन 9 के फर्स्ट स्टेज बूस्टर की मदद से। ये 13वां लॉन्च होगा जिसमें स्टारलिंक मिशन लॉन्च किया जा रहा है। all of our crew missions from, and this is where we sent people to the moon from. So with T minus 2 minutes and 25 seconds and counting, things are continuing to look good for today's Starlink mission. Hello, Space Talker fan. Yeah, welcome. Welcome to the live stream. Thank you for the joining. बस 2 मिनट बाकी है लॉन्च होने के लिए, और ये लॉन्च किया जा रहा है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, जो यूएसए में है। With that call out of stage 2 LOX load complete, that is the last of propellant loading on the vehicle. So both first and second stages are full of RP1 and liquid oxygen. Starlink 4, वो 4 का मतलब है कि 4 सेल में ये सैटेलाइट भेजे जाएंगे, क्योंकि इनका एम ये है कि 42,000 सैटेलाइट भेजने हैं, उसको 2 फेज में भेजेंगे। पहले 12,000 सैटेलाइट भेजेंगे, फिर उसके बाद 30,000 सैटेलाइट भेजे जाएंगे। तो जो 12,000 सैटेलाइट भेजे जाएंगे वो सिंगल ऑर्बिट पे नहीं भेजे जाएंगे, उनको 5 ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। उन ऑर्बिट को कहा गया है सेल। तो सेल 1 से सेल 5 तक पहले फेज़ में भरे जाएंगे। तो ये सेल 4 में भेजे जाएंगे ये सारे सैटेलाइट। अभी भी सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 और सेल 5 में कुछ नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं। उन टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट को अगर ऐड करें तो 2550 कुछ सैटेलाइट अभी हैं ऑर्बिट में। ये 12,000 सैटेलाइट जब पूरे हो जाएंगे तब सेकंड फेज चालू किया जाएगा, जिसमें सेल 6 से सेल 10 तक भेजे जाएंगे सैटेलाइट को। रीयूज्ड फेयरिंग का आई थिंक रीयूज्ड किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स मुझे मिली नहीं सर। आई हैव अ डाउट। या ओके, 14 सेकेंड्स बाकी है। 10, 9, रेडी फॉर लॉन्च 7, एवरीथिंग। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. MOD chamber pressure phenomenal. Vehicle is pitching downrange. Okay, everything is fine. We are T plus 37 seconds into the mission. Falcon 9 has successfully lifted off from Launch Complex 39A, carrying our 53 Starlink satellites into space. Moments ago, we began to throttle down the engines on the first stage in preparation for an event known as Max Q. This is where the vehicle will experience the highest amount of aerodynamic pressures. 10 किलोमीटर के आसपास, 9 किलोमीटर। Falcon 9 is supersonic. मैक्स की पहुंचने वाले हैं। Max Q. Max Q क्रॉस कर दिए 14. Awesome. Now that Max Q is behind us, we are throttling the engines back up to full power. Coming up are a series of events happening in quick succession. First is MECO, also known as main engine cutoff. This is where all 9 Merlin engines on the first stage will shut off to slow the vehicle down in preparation for the next milestone, which is stage separation. During this event, both the first and second stages will separate from one another. The first stage will make its way back to our drone ship,
and the 30 second stage will kilometer continue from the its sea journey level with second engine altitude. startup, or Speed is SES-1. right now During this event, 4000 the kilometer single per hour. Merlin vacuum engine on the second stage will light up M6 and propel the second stage along 9 with the Merlin Starlink engine are satellites into running out. orbit. And then shortly after SES-1, we'll have the fairing halves deploy and expose our Starlink satellites to the vacuum of space. The first of those events is expected to happen in a few seconds here. On board camera. Nico. Miko Stage separation confirmed. stage separation fairing deployment होगा इसके बाद successfully. Very good. Everything is fine. Fairing separation confirmed. All right, so as you just saw and heard, we successfully had main engine cutoff, stage separation. The second stage Merlin vacuum engine you see on the right-hand side of the screen has successfully started up, and we saw the two fairing halves deploy. की बात ही है. अब इंटरेस्टिंग है. लैंडिंग एंड सेकंड स्टेज अपने रास्ते पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. मेन फोकस तो लैंडिंग पे है. First stage While the of second Falcon 9 stage rocket. is doing its job, the first stage is coming back home to Earth. That is what you see on the left-hand side of the screen. It needs to execute 2 burns before its 13th landing attempt on our drone ship. The first burn is called the entry burn. Landing This is a interesting इसलिए है 3-engine क्योंकि burn ये 13 that बार helps reuse slow किया जा रहा down है the Falcon 9 first stage for first hitting the stage denser booster parts को. of the Earth's atmosphere. मतलब पिछले 12 बार And इसे then the यूज किया second जा burn चुका is called the है landing launching burn. में. This और ये is a 13 single बार engine launch burn है. पहली बार ऐसा है कि इसको that 13वीं brings the बार vehicle यूज किया speed जा down रहा है rapidly in order to Falcon land 9 rocket on के our drone first ship a stage short को. fall of gravitas. तो ये सक्सेसफुली अगर लैंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. ये न्यू रिकॉर्ड होगा Falcon 9 रॉकेट की. Falcon 9 To aid रॉकेट in का. recovery, we have a couple land of किया tools जाएगा that the drone first ship पे. stage uses. So if you look closely on जो screen, you're seeing some bursts of gas that अपने is समुद्र में nitrogen होंगे. from our attitude control system, and that helps to orient the first stage rocket. And then 4 also on मिनट 13 screen we सेकंड. have ओके. view सेकंड of स्टेज 2 की of our एल्टीट्यूड की 4 बात करें तो hypersonic लगभग grid 200 fins. Those किलोमीटर are के the आसपास honeycomb-like जा structures चुका that है. you see. स्पीड Those है will 10,000 swivel किलोमीटर and पर आवर. pivot, and those that helps to steer the first stage back to its targeted landing zone. We also और have फर्स्ट 4 स्टेज की landing legs Falcon that 9 are फर्स्ट stowed at स्टेज the की base एल्टीट्यूड of है the first 135 stage. किलोमीटर Those will deploy during from the the sea landing level burn, and a and speed those of will help secure the 6870 first stage किलोमीटर पर आवर. as we land on our drone ship. We still have about 2 minutes left before the first stage entry burn. Again, the first of 2 burns for the first stage. For now, we are just enjoying some great views of both the first stage returning back to Earth and the second stage making its way to space, makes its Both way vehicles into are orbit. following nominal trajectories. And I just heard the call out that we are in nominal trajectory, लैंडिंग so things सक्सेसफुल होना चाहिए. again continuing to go smoothly for today's Starlink mission. आप अपने स्क्रीन के राइट साइड देख रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ Falcon 9 रॉकेट और लेफ्ट साइड है फर्स्ट स्टेज बूस्टर जो अर्थ पे लैंड होगा, मतलब अपने घर वापस आएगा. और सेकंड स्टेज जा रहा है सैटेलाइट को 53 सैटेलाइट For को those that are just लोअर joining us, अर्थ we are in the ऑर्बिट में middle ले of जाने our के लिए, 49th जिसमें है Starlink mission. स्टारलिंक We मिशन weren't able to SpaceX catch का the मिशन है. liftoff. Don't worry, we have 2 more launches this weekend, so be sure to tune in. ओके 100 किलोमीटर आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट बूस्टर, मतलब Falcon 9 का बूस्टर, पहला बूस्टर About 30 फर्स्ट seconds स्टेज away from the first अर्थ stage एटमॉस्फेयर में entry. आ गया है कारमान लाइन को पार करते We हुए. talked a little bit about the engines on our vehicle. The engine that you see on screen is the single Merlin vacuum engine, which is optimized to perform in the vacuum of space. It can produce over 220,000 pounds of thrust in the vacuum of space. The first stage engines are optimized to perform लेफ्ट साइड है at sea वो level, and those बूस्टर can है produce जिसमें 9 about मर्लिन इंजन लगे हुए हैं. 190,000 सेकंड pounds of साइड है thrust. वो भी मर्लिन इंजन ही लगा हुआ है, लेकिन वो वैक्यूम ऑप्टिमाइज है जिसमें नोजल का साइज बदल दिया गया है बस.
Stage 1 FDS has saved. Stage 1 entry burn startup. ओके, एंट्री On बर्न screen, we स्टार्ट हो गया. have started the 50 entry kilometer from burn. the sea This burn level. is expected to last for about 20 seconds. It is very exciting to see the landing of Falcon Earlier, 9 we saw first stage the rocket. vehicle on the pad, and the first stage was Oh, basically covered in soot. Stage 1 entry burn shut This down. is the reason why. So basically, during the entry and landing burn, the vehicle is flying through its own plume of smoke, and that is what Both builds up the vehicles soot. continue to follow nominal trajectories. So landing burn for the first 30 stage is coming kilometer up in from the about a sea level. minute. And Landing shortly जल्दी after होने the वाले landing हैं. burn ends, we're going to be listening for a call out that's related to the second stage, known as SECO. That stands for Second Engine Cutoff. And we'll be shutting off the Merlin vacuum engine that you see on screen. And we'll be waiting for another call out related to the second stage of a good 10 orbital kilometer insertion. from the sea level. First stage of the Falcon 9 rocket. Now ready for the landing on drone ship. Stage 1 transonic. हो लैंडिंग हो जाए अच्छे से. Stage 2 is in terminal guidance. लैंडिंग. Stage 1 landing burn. Stage 2 FDS has saved. So our landing burn has begun. It's a single engine burn. This is also the period where we'll deploy our landing legs. And here comes our first stage for the 13th time attempting to land on our drone ship. Stage 1 landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. And X marks the spot for the 13th time. That's the first time that we have flown and landed a booster. न्यू अचीवमेंट है फैल्कन 9 रॉकेट का SpaceX के लिए, क्योंकि 13 बार लैंडिंग किया है इस फर्स्ट Nominal orbit इस बूस्टर insertion. ने Falcon 9 के फर्स्ट स्टेज ने. That is a great way to start the mission. Okay, And ये we देखने में also काफी just मजा heard आया. the call out that the second stage engine has Okay. successfully shut off and is now in a nominal 10 मिनट लगभग हो गए insertion. हैं लॉन्च के. With और ये confirmation लैंड, of अरे both हटो those, हटो मेरा we शकल will हटाओ. confirm पहले deployment रॉकेट of our देखो आप. Starlink satellites via रॉकेट SpaceX's देखो social कितने channels, आसानी से but लैंड we'll हो गया. also leave the mission audio live on Okay. our YouTube channel if you'd like to follow along through यही payload देखने आए थे deployment. वैसे तो. Thank you to the Federal Aviation Administration and our current Starlink customers, Okay. and of course to all of our viewers. As mentioned So- earlier, for those of you interested in even more space content, we're not done launching rockets तो just ये yet. लॉन्चिंग Stay tuned सक्सेसफुल for the रहा. Star अब 1 सेकंड mission स्टेज scheduled to अपने launch from रास्ते Vandenberg चले Space जाएंगे. Force Base. अब बात कर लेते हैं कुछ देर आपसे. तो ये मिशन सक्सेसफुल रहा. लैंडिंग हो गई है फर्स्ट स्टेज के बूस्टर की. और सेकंड स्टेज फैल्कन स्टारलिंक सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में ले जाया जाएगा आराम से. तो लगभग 10 मिनट हो गए लॉन्च के. और जो क्रिटिकल सिचुएशंस थी मैक्स की और लैंडिंग ऑफ बूस्टर वो हो चुके हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. ये लाइव स्ट्रीम एंड करते हैं क्योंकि ये सक्सेसफुली मिशन हो गया है. तो थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग. अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिर अगले मिशन में और अगले लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं हम ज़रूर जल्दी, और अगले वीडियो में मिलते हैं. तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें. गुड नाइट, बाय बाय. थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग. Go SpaceX. Bye bye. Take care.